So, good evening, everybody. I think we can start now. So, first of all, it's time for attendance. Not exactly attendance, but let's say what you have learned in last sessions. Alright, 20 more seconds, guys. If some of you are still not done. I think we can start now. Mhm. Alright, guys, now this is your first question. No, sorry. I think this is a wrong quiz. My bad. You have to join it again. It was a wrong quiz, I believe. Right? So you can log out again and rejoin it. Please join it within 1 minute. I believe this is a wrong quiz. So it's my bad. I created the new one, right? Whew, shit. Okay. So, yes, this is the right one. Join it again. No worries, guys. इंसान क्या है, गलतियों का पुतला है. Anyway, अब शगुन हो गया, सही बात है.
Okay, so I can now start, I believe. Ten more seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Wonderful, 33 correct answers. That is really good. Okay, let's see. All right, next one. So 16 correct answer. This command will not give you any output. By the way, I'm just showing you, right? Let me close that terminal, and I'm closing this one as well, just to do the same. All right, so any command before, sorry, after test will not give you any kind of output. So you can read about this command if you want, right? It's very good at although. So for example, let me just open my terminal, and here I am searching for terminal. So just take a look. I'm having this prompt, and here if I use date or maybe cal, so before this if I put test, now it's your responsibility to read about this command, why it is not giving output. Let's say test who am I, anything, test anything, you write something that is not going to give any output anyway. So it's your responsibility to read about this, but anyway, 16 correct answers. Fine. Now
So 21 correct answers. This is the first one. Debug mode, again it's up to you. These are all the questions, you can read about them, right? So nahi bataun, wow, what a nice name, really. So 15 correct answers. Okay, let me tell you about this. Uh, if you want to run multiple commands in a shell, why third is only correct answer. So somebody also saying first one is also, second is not the option. Okay, so let's say I have a command called cal and ls. Okay, if I use cal, if I use ls, both are the commands. If I use cal and ls, it is still going to give me the output of both command, and if I give semicolon here, right, still give me the output. Then why first is not correct, third is correct? Okay, the second, if you talk about cal and ls, this is also not correct, still it is giving the right answer. Okay, so when we talk about the multiple command, there is one rule. First of all, if you use cal and ls, you know what, it is giving the output, but the meaning of double and means if the first command will be running successfully, then it will run the second. That means if the first command is not running, second will not run. So it is not for running multiple, it is for AND operation, right? So I believe you are understanding that the first option cannot be true because it is not multiple command, it is AND. That means if the first one is true, then second will be true. Okay, about the second, I'm skipping it to you. So the right method is third, cal and semicolon ls, right? It doesn't matter the first command is running or not, it will run the second. Why second is not correct answer? So let me just write hashtag comment, why second is not correct, that you have to figure out, right? So I've given the right answer, that is this one, but why second is not correct, this one you have to figure out. Anyway, next. So I hope Chinmay you got your answer right.
Whoa. So only 10 correct answers. By the way, this sign is known as shebang and hashbang both. So 10 correct answers. All right. By the way, it's not THEN. What is the exit code of a script that got successfully executed? It's not then, it's the. Remove this then with the THE. It's a THE. ओके वंडरफुल सी क्वेश्चन का मतलब क्या था आपको थोड़ा सा बता देता हूं मैं राइट फॉर एग्जांपल ये एक कमांड है डेट और मे बी कैल इफ आई एंटर कैल एंड आई एम गेटिंग सम आउटपुट पता कैसे चलेगा कि ये जो हमने इनपुट दिया है वो मतलब जो आउटपुट आया वो सही है या नहीं सही आई मीन if I'm typing cal command I got the output जो भी आउटपुट आया ये एरर है या सक्सेस कोड है या सक्सेसफुल रन हुआ राइट सक्सेसफुल रन हुआ इसका पता कैसे चलेगा फॉर एग्जांपल आई एम टाइपिंग cal कमांड तो कैसे पता पड़ेगा कि जो आउटपुट है वो एरर है सक्सेस है डेफिनेटली देयर इज़ अ नो वे कि आप कैल कमांड चला के ये आउटपुट दिखा तो समझ में आया आप बोलोगे कि लग तो रहा है आउटपुट है तो मैं आपको एक कमांड देता हूँ फॉर एग्जांपल अगर मैं ट्रिपल के कमांड चलाता हूँ ओके सो आप बोलोगे कि कैल कमांड का आउटपुट यही आता है दुनिया में आप किसी भी लिनक्स पे चला के देख लो सिमिलरली इफ आई एम सेइंग ट्रिपल के एंटर पता है आप दुनिया के किसी भी लिनक्स में चला के देख लो ट्रिपल के कमांड का आउटपुट यही आएगा और मैं बोल रहा हूँ कि ये कमांड मैंने बनाई है फॉर एग्जाम्पल द क्रिएटर ऑफ दिस कमांड इज मी एंड इफ यू रन दिस कमांड दिस विल बी द आउटपुट इन एवरी लिनक्स इन दिस वर्ल्ड सो हाउ डू आई फिगर आउट कि जो कमांड चली है वो सच में चली है उसका आउटपुट सही है या नहीं सही मतलब एरर है आउटपुट है For this, in every programming language, we have a term, we call it exit code, right? Exit code या काफ़ी लोग उसे success code भी बोलते हैं exit code बोल दो या success code बोल दो better keyword is exit code. So any program, if you are compiling or running, you're compiling or running, so for example आपने run किया रन करने के बाद उसका जो एग्जिट कोड है इफ एग्जिट कोड इज 0 देन इट्स अ सक्सेस इफ एग्जिट कोड इज नॉन जीरो इट्स अ फेलियर एरर है ये ठीक है अब देखो इफ आई रन दिस कैल कमांड एग्जिट कोड चेक कर सकते हैं इको डॉलर क्वेश्चन मार्क से वी गॉट 0 इफ आई रन दिस कमांड again if I check exit code this is non-zero so you can check exit code by using echo dollar question mark तो अगर आपका exit code 0 नहीं है तो जो भी आपने प्रोग्राम दिया था that is not a successful output okay so the right answer is what is the ये n अलग से लग गया था what is the exit code so ऑफ दिस लैंग्वेज पे मत जाना पर आपको समझ में आ रहा होगा ठीक है एनीवे
Going next. Wonderful. The right answer is second and third. तो मैं आपको वापस से रिवाइज करवा देता हूँ. In the next, if you are going to talk about a normal user, fine. A user called Jack, that is definitely a non-root user. That means it having unlimited number of permissions where it can write data. So user data कहाँ कहाँ पे लिख सकता है? अपने home directory पे, right? Second, under temp. Third, under var temp. Okay. In general, 99.99% cases, these are the all three possible locations, ठीक है, जहाँ पे a user can write, a normal user can write data. ठीक है, तो ये याद रखना, काफ़ी सारे क्वेश्चंस पे आपको ये हेल्प करेगा, खासकर इंटरव्यू में, राइट. राइट आंसर इज दिस वन. इसका मतलब क्या है, ऐसे देख लो. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ स्क्रिप्ट कॉल्ड let's say a.sh, and here I'm writing some normal code like date or maybe cal pwd or ls echo hello world, right? So whatever we have given, this is your input. If I run this script like this, तो हमें क्या दिखेगा, सिर्फ आउटपुट, सी आउटपुट. बट इफ आई यूज -x here, तो ये हर एक इनपुट और उसके आउटपुट को भी दिखाएगा. सी, दिस आउटपुट इज ड्यू टू दिस दिस एंड दिस. तो आपको इनपुट एंड आउटपुट दोनों चाहिए, तो आप -x यूज कर सकते हैं. एनीवे, सो second last question.
So 10 correct answer, right? अब आप क्वेश्चन पढ़ो, हाउ टू लिस्ट only hidden files and folder in Linux. So if you are creating some, let's say, directory hello and you are going over there, यहाँ पे ls से मैं एक normal डायरेक्टरी बनाता हूँ और एक hidden बनाता हूँ, right? When you do ls normal दिखेगी, when you do ls-a दोनों दिखेंगे. तो हमें सब कुछ नहीं चाहिए था, हमें क्या चाहिए था, ओनली हिडन फाइल्स एंड फोल्डर. अब इसका आंसर कैसे निकलेगा ये आप पे है, लेकिन मैंने ऐसे नॉर्मल आइडिया दिया है कि ls-a फॉर ऑल, ls-a बोलो या हाइफन ऑल बोल दो, एक ही बात है, राइट? सो यू नीड टू फिगर आउट कि कैसे दिखेगा. बहुत छोटे क्वेश्चंस हैं बट अच्छे हैं मतलब. So we have discussed about the same. So $hashtag will give you the number of argument, right? जिन लोगों ने पढ़ा था उनके लिए ठीक है. Let's see. 6 out of 10. 6 out of 10. Oh, Yukta, welcome back. So Vishnupal and Chinmay, the rankers. Wonderful guys, amazing job. Okay,